तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वी आर बैक विद अनदर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड दिस टाइम इट इज ऑटोडेस्क। अगर आपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम किया तो ऑटोडेस्क का नाम जरूर सुना होगा। गेम खेलते समय ऑटोडेस्क जरूर लिख के आया होगा गेम की शुरुआत में, और ऑटो कैड जैसे सॉफ्टवेयर को तो कौन नहीं जानता है। तो ऑटोडेस्क नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सो आई अप्लाइड फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल इन ऑटोडेस्क। कॉम्पनसेशन की बात करें तो बेस वॉज 35 lakhs प्लस वेरिएबल प्लस स्टॉक, सो ऑलमोस्ट 50 LPA was the total compensation. And surprisingly, Autodesk का interview process is very simple. It just had 3 rounds compared to other popular companies जो कि 6, 7, 8 round लेती हैं. Even at mid-level engineering roles, Autodesk has a very simple and clean structure for interviewing software engineers. That totally depends on your role. I applied for a position that required Java and AWS. If you apply for a position that requires C++, तो आपसे C++ के questions पूछे जाएंगे. So let's go round by round. So in the first round, that was the DSA round. They just had one DSA question. एक बहुत ही easy sliding window का question था जिसमें हमें regions club करने थे. So the question was, there were a certain number of balloons on a line and using minimum arrows you have to pop all the balloons. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, लीड कोड पे मिल जाएगा। पोस्ट दिस क्वेश्चन उन्होंने जावा लैंग्वेज को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मोस्ट ऑफ देम वर ट्रिक क्वेश्चंस, सच एज कि जावा में जैसे ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक होता है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स इन ऑल द सिचुएशंस। इवन इन द केस ऑफ एरर या एक्सेप्शन फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होता ही है। हाउ कैन यू स्किप द फाइनली ब्लॉक? तो इस तरीके के कुछ ट्रिक क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, मोस्टली जावा रिलेटेड बट ऑल्सो रिलेटेड टू जनरल कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एज वेल, कुछ डेटाबेस के क्वेश्चंस। तो डीएसए राउंड वाज सिंपल। नेक्स्ट अप वाज द एचएलडी राउंड एंड one of the very few HLD rounds which went well. I think that was because the interviewer was a very senior principal engineer and he knew how to talk his way through a system design round with the candidate. So it was a very simple API design round. So the question was that I had to design APIs for a Zoom car kind of an application. That means you can register as a driver or a passenger. So let's suppose you have registered as a driver, so other people can find you. Let's say you're going from Pune to Mumbai, so other people can see who all are going from Pune to Mumbai and they can tag along with a small fees. But eventually ये भी HLD के side पे चला गया because I created the APIs and the interviewer was not convinced कि यार इन APIs से कैसे काम करोगे. So I had to explain sort of a very simple system, and then there were follow-up questions, and then I had to tell the interviewer ki okay, if this happens my system will handle it this way, this API will handle it this way. So that was about the second round. That was the HLD system design round, and at the end हमेशा managerial round होता है. Now coincidentally in this managerial round, so there were 2 interviewers. One was the engineering manager जिनकी टीम के लिए हायरिंग हो रही थी, and then there was the senior manager जो कि उसी chain of management में थे. Now the senior manager had some technical crossovers with my projects, मतलब कि I used the same technologies that they had expertise on, so उसके ऊपर काफ़ी लंबी बात चली. In my other projects also, like it was mostly project discussion, like 40 minutes तक. उसके बाद there were very general kind of managerial questions, हमेशा की तरह कि conflict में क्या करोगे, and what if there is a conflict between you and the manager, what if there is a conflict between you and a colleague, and there's a situation where your work is getting delayed, how do you inform the stakeholders and all that. So बहुत general questions उसके बाद. And believe it or not, that was it. That was the 3 round छोटा सा cohort of the Autodesk senior software engineering position, and the verdict was ghosted. So होता है, generally happens. Thank you so much for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर देना, और कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट्स में बताओ मुझे. चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.